तो हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी कर रहे थे जहां तक मुझे याद है। राइट, हेडिंग इज इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, ठीक है ना। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग कॉमन इंपॉर्टेंस लिखेंगे, ठीक है, कि क्या क्या कॉमन इंपॉर्टेंस है डिफरेंट एल्गिल ग्रुप का, और उसके बाद फिर हम लोग अलग अलग एल्गिल ग्रुप का क्या इंपॉर्टेंस है वो करेंगे। तो राइट, हम फर्स्ट पॉइंट लिखिए, दे आर सिंक ऑफ, दे आर सिंक, SINK, they are sink of nearly, they are sink of nearly half of atmospheric CO2, they are sink of nearly half of atmospheric CO2। तो जो एटमॉस्फेयर में CO2 है उसमें से जितना हाफ है ये कंज्यूम करते हैं, पहला। दूसरा, अब ये क्वेश्चन आता है कि ये CO2 क्यों कंज्यूम करते हैं, व्हाई दे कंज्यूम CO2। सो दे कंज्यूम CO2 इन ऑर्डर टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, उनको फोटोसिंथेसिस करना है, दैट्स व्हाई दे कंज्यूम CO2, ठीक है। तो जब फोटोसिंथेसिस करेंगे तो दे विल प्रोड्यूस एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड, और वो जो एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट फॉर्म्स बेसिस ऑफ एक्वेटिक फूड चेन। तो एक्वेटिक फूड चेन मान सकते हो। थ्रो डाउन, through photosynthesis, through photosynthesis they produce, through photosynthesis they produce energy rich, they produce energy rich organic compound, they produce energy rich organic compound which forms basis of, which forms basis of aquatic food chain, which forms basis of aquatic food chain, ठीक है, लिख लिया ना। जब ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है, तो एज ए बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन विल बी प्रोड्यूस्ड, दैट मींस दे विल इंक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन इट्स सराउंडिंग और इट्स इमीडिएट इन्वायरमेंट, और इसका इमीडिएट इन्वायरमेंट क्या होता है, वाटर। तो मतलब वाटर में ये डिजोल्व ऑक्सीजन के अमाउंट इंक्रीज करेंगे, और उसका फायदा क्या होगा, इट विल हेल्प इन सस्टेनिंग ऑल अदर एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स, अदर एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स को सस्टेन करने में ये हेल्प करेगा। तो राइट, during their photosynthesis, during their photosynthesis oxygen is produced as a byproduct, oxygen is produced as a byproduct, thus they increase, thus they increase amount of dissolved oxygen, amount of dissolved oxygen in water body, amount of dissolved oxygen in water body, ठीक है, लिख लिया ना। नेक्स्ट लिखिए, लेमिनेरिया, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लेमिनेरिया sargassum porphyra, laminaria sargassum porphyra, along with 70 other species, along with
70 other species of marine algae, 70 other species of marine algae is used as source of food. is used as source of food. ठीक है, तो ये सारे जो थे हमारे कॉमन इंपॉर्टेंस थे जो हर एल्गल ग्रुप के लिए एप्लीकेबल है. अब 3 एल्गल ग्रुप है हमारे पास, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी. ठीक है, तो तीनों का इंपॉर्टेंस अलग अलग. राइट डाउन इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोरोफाइसी. इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोरोफाइसी. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखिए. ग्रीन algae, chlorella, green algae chlorella is a rich source of protein, and it is used as dietary supplement. It is used as dietary supplement. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. Chlorella is also source of antibiotic chlorelline. Chlorella is also source of antibiotic chlorelline. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए. ग्रीन algae cephaloros. Green algae cephaloros, cephaleuros. Cephaloros is parasitic, and responsible for red rust of tea. Is responsible for red rust of tea. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए. ग्रीन algae alva, ULVA. Green algae alva is commonly known as sea lettuce. Green algae alva is commonly known as sea lettuce, and it is edible. खाते हैं लोग. ठीक है, ना नेक्स्ट लिखिए. Phaeophyceae. Importance of Phaeophyceae.
पैटर्न फर्स्ट पॉइंट लिखिए, seaweeds such as laminaria, sargassum, macrocystis, seaweed such as laminaria, sargassum, macrocystis serves as source of iodine, serves as source of iodine. नेक्स्ट लिखिए, सेकंड, फाइकोकोलॉइड algene obtained from brown algae is used for making jam, jelly and ice cream. Is used for making jam, jelly and ice cream. ठीक है, फाइकोकोलाइड algene obtained from brown algae is used for making jam, jelly and ice cream. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ रेड algae. नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ रेड algae. फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, फाइकोकोलाइड agar and carrageen obtained from red algae is used for making jam, jelly and ice cream. Is used for making jam, jelly and ice cream. सेम यूज है. ठीक है, दूसरा, आपने एक टर्म सुना होगा, टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर सबने सुना होगा. तो जब हम लोग टिश्यू कल्चर करते हैं तो हम लोग मीडियम बनाते हैं, और वो जो मीडियम बनाते हैं उसको हम लोग सॉलिडिफाई करते हैं, और उसको सॉलिडिफाई करने के लिए वी यूज अगर. टर्म अगर obtained from red algae, agar obtained from red algae such as Gelidium, porphyra, gracilaria, Gelidium, porphyra, gracilaria is used for solidifying
is used for solidifying tissue culture medium, is used for solidifying tissue culture medium. ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट हेडिंग इज ब्रायोफाइट्स। लास्ट पॉइंट में मैंने कहा फाइकोकोलाइड अगर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फाइकोकोलाइड अगर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड algae such as Gracilaria, Gelidium, Porphyra, etc. is used for solidifying tissue culture medium. Is used for solidifying tissue culture medium. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए ब्रायोफाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग इज ब्रायोफाइट्स। ठीक है, ब्रायोफाइट्स अप टू एल्गी, अप टू एल्गिएटस लेवल। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा आता है ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स को स्टार्ट करने से पहले एक कंसेप्ट समझना जरूरी है कि आगे बहुत बार यूज होगा, तो आपको पता होना चाहिए। देखो, प्लांट के लाइफ में दो फेजेस होते हैं, एक होता है गेमेटोफाइट और दूसरा होता है स्पोरोफाइट। ये दो फेजेस हैं प्लांट के लाइफ साइकिल में। गेमेटोफाइट किसको कहते हैं? विच प्रोड्यूस गेमीट। ठीक है, और स्पोरोफाइट किसको कहते हैं? विच प्रोड्यूसेस स्पोर। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा ना लाइफ साइकिल समझाना चाहता हूं ताकि आपको आगे समझने में आसानी हो। ऐसे ये तो लास्ट में आता है चैप्टर के, बट यहां से हम लोग ये टर्म रेगुलरली यूज करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए। देखो, ये जो गेमेटोफाइट है ये हैप्लॉइड होता है। ठीक है, इस हैप्लॉइड गेमेटोफाइट में माइटोसिस हुआ। ठीक है, इसका रिजल्टेंट क्या होगा? गेमिटोजेनेसिस। ठीक है, मतलब प्रोडक्शन ऑफ गेमीट। तो आपका मेल गेमीट और फीमेल गेमीट प्रोड्यूस होगा। अब ये जो मेल और फीमेल गेमीट है दे विल फ्यूज, इसको हम लोग कहते हैं सिनगैमी। ठीक है, जब ये सिनगैमी होगा दैट विल रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट। जाइगोट प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, अब ये जाइगोट जो है
ये माइटोसिस से डिवाइड करेगा या डायरेक्ट मियोसिस भी इसमें हो सकता है, वो अभी हम लोग आगे देखेंगे, हम लोग सिंपल रख रहे हैं। एंड दैट डेवलप्स इनटू स्पोरोफाइट 2n। अब स्पोरोफाइट में क्या होगा, मियोसिस होगा, एंड एज ए रिजल्ट हैप्लॉइड स्पोर विल बी प्रोड्यूस्ड। और ये हैप्लॉइड स्पोर जो है, ठीक है, ये माइटोसिस से डिवाइड करके गेमेटोफाइट बना देगा। तो वो स्ट्रक्चर, ठीक है, वो स्ट्रक्चर जो गेमीट प्रोड्यूस कर रहा है उसको गेमेटोफाइट कहते हैं, और वो स्ट्रक्चर जो स्पोर प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं स्पोरोफाइट। ठीक है, ये ऑल्टरनेशन जनरेशन है, लेकिन वो अभी टर्म मैं यूज नहीं कर रहा क्योंकि हमें आगे करना है। इसको जल्दी से बना लीजिए अपने समझने के लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको बना लीजिए, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके ना, तो अगर हम ब्रायोफाइट को देखें तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं दे इंक्लूड liverworts, hornworts and mosses. Third one, bryophyte includes liverwort, hornwort and mosses. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, they prefer to grow in moist and shaded area. They prefer to grow in moist and shaded area. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, bryophytes are also referred as amphibians of plant kingdom. Bryophytes are also referred as amphibians of plant kingdom, as they require water, for completion of their life cycle, as they require water for completion of their life cycle. Water helps in transport of male gamete at the time of fertilization. At the time of fertilization. Next one लिखिए, plant body bryophyte is more elaborate. Plant body of bryophyte is more elaborate than algae. It can be prostrate or erect. It can be prostrate or erect. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए,
they have, next one लिखिए, they have root like, stem like and leaf like structure. They have root like, stem like and leaf like structure, but they lack true root, true stem and true leaf. But they lack true root, true stem and true leaf. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. They are attached to substratum. They are attached to substratum. They are attached to substratum with the help of rhizoids. With the help of rhizoids. Which can be unicellular or multicellular branched. Which can be unicellular or multicellular branched. कहां पे कैसा होता है वो भी आगे आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है ना. नेक्स्ट पॉइंट. जब आप ब्रायोफाइट को देखिएगा तो इन केस ऑफ ब्रायोफाइट डोमिनेंट फेज इज गिमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन गिमेटोफाइट. समझ में आया पॉइंट कि जो आपको दिखता है प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट में वो उसका गिमेटोफाइट है और जो स्पोरोफाइट है वो उस पर कंप्लीटली डिपेंडेंट है. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मैंने हर्ष ये कहा कि जो ब्रायोफाइट है उसमें जो आपको प्लांट बॉडी डोमिनेंट फेज दिखता है दैट इज गिमेटोफाइट, वो गिमेटोफिटिक फेज है. और जो आपका स्पोरोफाइट है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है गिमेटोफाइट पे. स्पोरोफाइट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन गिमेटोफाइट. ठीक है. व्हाई? बिकॉज गिमेटोफाइट इज ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक. ठीक है, राइट डाउन. In case of bryophyte, dominant phase is gametophyte. Dominant phase is gametophyte and sporophyte is completely dependent upon gametophyte as gametophyte is green and photosynthetic. As gametophyte is green and photosynthetic. ठीक है, देख लिया ना. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. अगला पॉइंट. जब आप ब्रायोफाइट को देखेंगे तो 6 ऑर्गन जो होता है इट इज प्रोड्यूस्ड ऑन गेमेटोफाइट एंड 6 ऑर्गन इज मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड.
6 ऑर्गन जो होगा वो मल्टी सेलुलर होगा और जैकेटेड होगा। जैकेटेड का मतलब देयर इज प्रोटेक्टिव कवरिंग। राइट। In bryophyte, 6 organ is produced on gametophyte. 6 organ is produced on gametophyte. ठीक है, they are multicellular and jacketed. They are multicellular and jacketed. Multicellular and jacketed. ठीक है, male sex organ is antheridium. Male sex organ is antheridium. It is club shaped, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। It is club shaped, ठीक है, and female sex organ is archegonium, which is flask shaped, with swollen base known as venter, which contains single egg. ठीक है, ऐसे करके होता है। This is your venter, and within this venter we have single egg. Okay, आ रहा है वीडियो? आ गया होगा भाई। देखो अब क्या होता है, इसको समझ लो थोड़ा। At the time of fertilization, what will happen? This antheridium will produce biflagellated male gamete. That is antherozoid. ठीक है, and this archegonium will produce K plus ion and malic acid. ठीक है, अब क्या होगा कि this K plus ion and malic acid will act as chemoattractant. They will act as chemoattractant. Now it will attract this antherozoid towards this archegonium, and it will enter inside this archegonium and will fuse with egg. समझ में आई है? क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? जल्दी से इसको बना लीजिए, इसको बनाते आगे, बना लीजिए जल्दी से। ये बना लिया था? हाँ, दोनों कीमो अट्रैक्टेंट है जो आर्किगोनिया रिलीज करता है। बोथ ऑफ देम एक्ट एज अ कीमो अट्रैक्टेंट। चलिए आगे लिखते हैं। बेटा नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, इसको समझ लीजिए पहले फिर लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको समझिए। जब फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन होगा
तो डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा, ठीक है। तो जब ये फर्टिलाइज हुआ तो दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट ना। अगर आपको याद होगा तो मैंने एल्गी में आपको बताया था कि देयर इज नो एम्ब्रियो स्टेज, एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता है जाइगोट से उसमें इमीडिएट मियोसिस। लेकिन यहाँ पे क्या है कि दिस जाइगोट फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट इवोल्यूशनरी फीचर है ये, दिस जाइगोट फॉर्म विल नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, मतलब इसमें मियोसिस इमीडिएटली नहीं होगा। तो क्या होगा, सबसे पहले इसमें मियोसिस की जगह माइटोसिस होगा और इसके कारण क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो, ठीक है। दैट इज इन फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड दैट्स व्हाई ब्रायोफाइट्स आर आल्सो रिफर्ड एज फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स, फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स। मतलब क्या हुआ कि ये ऐसा पहला प्लांट ग्रुप है जहां पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, इससे पहले वाले प्लांट ग्रुप में एम्ब्रियो नहीं बनता है, ठीक है। थर्ड हम zygote formed as a result of fertilization, zygote formed as a result of fertilization do not undergo reduction division, do not undergo reduction division immediately, do not undergo reduction division immediately. It first divides by mitosis, first क्या हो गया, वीडियो को, वीडियो नहीं आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है क्या, पता है इनकी तो आपका प्रॉब्लम है कुछ। इट फर्स्ट डिवाइड्स बाय माइटोसिस to form embryo. It first divides by mitosis to form embryo, which later on develops into sporophyte, which later on develops into sporophyte. So bryophytes are first embryophytes. So bryophytes are first embryophytes. अब जो embryo है वो किसमें, that's why bryophytes are first embryophytes, that is bryophytes are first embryophytes, that is first plant group, that is first plant group to have embryo, first plant group to have embryo. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ये हो गया। अगला पॉइंट लिखिए, स्पोरोफाइट और ब्रायोफाइट, स्पोरोफाइट और ब्रायोफाइट is divided into, sporophyte or bryophyte is divided into three parts, is divided into three parts, that is foot, seta and capsule. Sporophyte or bryophyte is divided into three parts, that is foot, seta and capsule. फुट, सीटा एंड कैप्सूल। अब इसको थोड़ा समझ लेना फिर इसको बना लेना। देखो मान लीजिए ये हमारा गेमेटोफाइट है, ठीक है, दिस इज आवर गेमेटोफाइट। नहीं, स्पोरोफाइट एम्ब्रियो इज नॉट सेम,
Sporophyte is a structure which produces spore. Embryo will not produce directly spore. Embryo will develop into sporophyte, then it will produce spore. But embryo is part of sporophytic generation because it is diploid. Now, अभी जो गेमेटोफाइट है, तो मैंने कहा कि ये फुट, सीटा और कैप्सूल में स्पोरोफाइट डिवाइडेड है. तो ये हो गया हमारा फुट. ठीक है, ये हो गया हमारा सीटा और ये हो गया हमारा कैप्सूल. ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है देखो, कि थोड़ा समझ लो. ये जो फुट है, ठीक है, इट हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ स्पोरोफाइट टू गेमेटोफाइट, पहला काम. दूसरा काम, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम गेमेटोफाइट. तो दो काम है इसका. पहला, यहां से अटैचमेंट प्रोवाइड करना गेमेटोफाइट से, दूसरा न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना. नाउ सीटा, सीटा का क्या काम है? सीटा हेल्प्स इन कनेक्टिंग फुट विथ कैप्सूल. कैप्सूल और फुट को कनेक्ट करने में हेल्प करता है कौन? सीटा. ठीक है. देन कैप्सूल, कैप्सूल क्या है? कैप्सूल इज ए स्ट्रक्चर. ठीक है, कैप्सूल जो है, इट इज ए स्ट्रक्चर विच कंटेन्स स्पोर. ठीक है, तो जब सीटा ऐसे से हिलेगा तो कैप्सूल के अंदर वाला स्पोर जो अगर मैच्योर हो गया तो रिलीज हो जाएगा. राइट डाउन, राइट डाउन. Sporophyte of bryophyte, sporophyte of bryophyte is divided into three parts. Sporophyte of bryophyte is divided into three parts. That is foot, seta, that is foot, seta and capsule. Foot, seta and capsule. First, next one लिखिए. Foot is the structure. Foot is the structure which helps in. Foot is the structure which helps in attachment of sporophyte with gametophyte, sporophyte with gametophyte, and it also helps in absorption of nutrition from gametophyte. Nutrition from gametophyte. Second point लिखिए. Seta is the structure. Seta is the structure which connects foot with capsule. Foot with capsule and also helps in exposing capsule. Also helps in exposing capsule. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. Capsule is the structure. Capsule is the structure which contains spore. Capsule is the structure which contains spore. ठीक है, इस डायग्राम को जल्दी से बना लीजिए. फूड जो है अटैचमेंट में हेल्प करता है, प्लस
It helps in absorption of nutrition from gametophyte. Absorption of nutrition from gametophyte. ठीक है, बन गया। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट। नेक्स्ट हेडिंग इज classification of bryophyte. ठीक है, तो जैसे मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूं वैसे आप भी फ्लो चार्ट बना लीजिए, फिर की करके हर ग्रुप को हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक है, hepatic coccyda और liverworts, example Rixia, Markensia, Thalia, Forella, etc. ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड, एंथोसिरोटॉक्सिडा और हॉर्नवर्ट, एग्जाम्पल एंथोसिरोस। ठीक है, नेक्स्ट ब्रायोप्सिडा और मॉसेस, एग्जाम्पल स्फैग्नम, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, फोगोनेटम, एक्सेट्रा। बन गया? हाँ, hepatic coccyda और liverworts। एंथोसिरोटॉक्सिडा, ANTHOCEROTOPSIDA, एंथोसिरोटॉक्सिडा और हॉर्नवर्ट, एग्जाम्पल एंथोसिरोस, CEROS। ठीक है, राइट ऑन हेडिंग। लिवरवर्ट्स, तो मैं उन पॉइंट्स को डिस्कस नहीं करूंगा जो मैंने ब्रायोफाइट के कॉमन फीचर में डिस्कस कर लिया है। मैं सिर्फ जो स्पेसिफिकली लिवरवर्ट से रिलेटेड पॉइंट्स होंगे उनको डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको खत्म करते हैं ब्रायोफाइट्स को। ठीक है, थैंक यू।